गुजरात के सर्वांगीण विकास और नल से जल योजना जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचे लगे, ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ये वीडियो आपको किसी फिल्मी सेट की तरह लग सकती है, लेकिन ये कोई फिल्म का सेट नहीं है। ये गुजरात के एक गांव की तस्वीरें हैं, जहां सिर पर पानी को बेड़ा लेकर महिलाएं 2 किलोमीटर चलकर कड़ी धूप में पानी लाती हैं। नर्मदा जिला का ये वही चापट गांव है, जहां पिछले दिनों एम्बुलेंस के अभाव में झोली में डालकर गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। अब उसी गांव से आई तस्वीरों पर विवाद और चर्चा के बावजूद सरकार ने गांव के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई है। और ऐसे में चापट गांव में पीने की बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग सिर पर मटका उठाकर 2 किलोमीटर चलकर पानी भरने जाते हैं। पानी भरने जाने के लिए यहाँ के लोगों के पास सड़क भी नहीं है, कच्चे रास्ते पर ही होकर वहाँ पहुँचना पड़ रहा है। अमारे पानी बहुत तकलीफ छे। पानी लेवा जता घरे आवता मोडू थई जाए तो घरवाड़ो लड़े छे। खूब तकलीफ थई छे। पानी ना लीधे कोई नवी छोकरी परણીને आवती नहीं। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पानी लेने के लिए लोग नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं और सरकार के विकास पर करारा तमाचा लगाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम से यह गांव सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश विदेश के हजारों पर्यटक रोजाना आते हैं, लेकिन इस गांव के विकास को लेकर सरकार की उदासीनता से ग्रामीण भी परेशान है। एक और सरकार आदिवासियों के विकास की बात करती है, वहीं नर्मदा जिला का ये गांव विकास के दावों को खोखला साबित करता है। गुजरात के वडोदरा में एक और सड़क हादसे में कॉलेज की छात्रा को जान गंवानी पड़ी है। वडोदरा में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर एक और सड़क दुर्घटना की खबर वाघोड़िया 4 रास्ता ब्रिज निकट से सामने आई, जहां निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा को बेकाबू रफ्तार टेम्पो चालक ने कुचल दिया, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा मैत्री शाह का दुखद निधन हुआ है। वडोदरा में पिछले 3 दिनों में सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी का 101 साल की उम्र में निधन हुआ है। ब्रह्मा कुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का सोमवार देर रात 1:20 पर निधन हो गया। उन्होंने 101 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ थी और अहमदाबाद के जायडिस अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह राजस्थान के आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांति वन में रखा जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल की सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की गई है। दादी वर्ष 1937 में ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना से लेकर आज तक 87 वर्ष की यात्रा की साक्षी रही हैं। पिछले 40 से अधिक वर्ष से वे संगठन के ही युवा प्रभाग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनके नेतृत्व में युवा प्रभाग ने देश भर में अनेक राष्ट्रीय युवा पद यात्रा, साइकिल यात्रा और अन्य कई अभियान चलाए। आज उनके दुखद निधन से समूचा ब्रह्मा कुमारी परिवार शोक में डूब गया है। गुजरात के अमरेली की अक्षरधाम सोसाइटी में प्राथमिक सुविधाएं न मिलने से आक्रोश देखा जा रहा है। अमरेली की अक्षरधाम सोसाइटी में प्राथमिक सुविधाएं नहीं होने से महिलाएं परेशान हैं। सोसाइटी की महिलाओं ने अमरेली पालिका पहुंचकर हंगामा मचाते हुए सड़क, गंदगी जैसी प्राथमिक सुविधा के अभाव में आक्रोश जताया। पालिका के प्रमुख और चीफ ऑफिसर मौजूद नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने राम धून कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। અમે લાઠી રોડ અક્ષરધામ સોસાયટી ટેલિફોન ક્વાર્ટર પાછળથી આવીએ છીએ। અમારે રોડ રસ્તા અને સફાઈનો મોટો પ્રશ્ન છે। ચોમાસામાં સિનિયર સિટીઝનોને ખાડા ખુબડાવાળા રોડ ઉપરથી પડી જાય તેવી પરિસ્થિતિ હોય, તેમજ રોડ ઉપર પાણી પણ ભરાયેલું હોય છે, તેમાંથી પસાર થવું પણ મુશ્કેલ પડે છે। બાળકોને સ્કૂલે જવામાં પણ મુશ્કેલ પડે છે। અમારા વિસ્તારમાં આવેલ આંગણવાડીમાં ચોમાસામાં
બાળકોને વાલીઓ મૂકવા પણ આવતા નથી. સરકાર એક તરફ શિક્ષણ અભિયાન ચલાવી રહી છે, ત્યારે આ વિસ્તારમાં આવેલા આંગણવાડીમાં ચોમાસામાં બાળકો પણ ચાલી શકતા નથી. તેવી હાલતમાં બદતર રોડ છે. સૌથી પહેલા અમે આ વિસ્તારમાં રોડ બનાવવા 2020માં અરજી આપેલ. જે રોડ જે તે વખતના બોર્ડ અને વહીવટી તંત્ર પાલિકા દ્વારા મંજૂર પણ થઈ ગયેલો. આ રોડ મંજૂર થયાનું પ્રિન્ટ મીડિયામાં પણ છપાયેલું હતું. છતાં પણ આજે 5 વર્ષ થયા છતાં રોડ બનેલ નથી. જ્યાં રોડની જરૂરિયાત નથી ત્યાં રોડ ઉપર રોડ બનાવી નાખવામાં આવ્યા છે. એવા પણ ઘણા દાખલા છે. અમારા પહેલા જ્યાં નવી સોસાયટી છે ત્યાં પણ રોડ થઈ ગયા છે. તો અમારા રોડ શા માટે 5 વર્ષથી બનાવવામાં આવ્યો નથી? નગરપાલિકામાં આ બાબતે અમે અવારનવાર રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ પાલિકાનું નિંભર તંત્ર જો અમને કઈ આ બાબતે જવાબ આપતું નથી. અમે નગરપાલિકામાં આજે આવેલ છે અને રોડ બાબતમાં અમે આવેલ છે અને અમારો રોડ 2020માં અમે અરજી આપેલ છે, છતાં પણ આ લોકોએ અમને કઈ જવાબ આપેલ નથી. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा उत्तर वाहिनी पंचकोशी व्यवस्था का आज निरीक्षण किया। नर्मदा जिल्लाમાં રામપુરા ખાતેથી નર્મદા પરિક્રમાનો પ્રારંભ થાય છે તો હજારોની સંખ્યામાં પરિક્રમા કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા આવતા હોય છે। ત્યારે આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજે જે પરિક્રમા સ્થળ છે તેની મુલાકાત લીધી અને જે ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગ અને જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે પરિક્રમાવાસીઓ માટે જે સુવિધાનો જે ઊભી કરવામાં આવી છે તેનું નિરીક્ષણ કર્યું છે। આપ જોઈ શકો છો જેટી પર જે પરિક્રમાવાસીઓ હાલ આવી રહ્યા છે તો હાલ જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જેઓએ હાલ નર્મદા મૈયાની પૂજા કરી હતી અને હાલ તેઓ જે પરિક્રમા કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ સાથે જે વાત કરી રહ્યા છે અને જે પ્રમાણે સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે પરિક્રમા માટે તેનું ખાસ કરીને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જે છે તે નિરીક્ષણ કરવા માટે આવ્યા છે। તમે બધા અહીંયા બેઠા તો જઈને આવ્યા છો, દર વર્ષે આવતા હશો। આમ તો કઈ બીજું કહેવાનું નથી, માં નર્મદાને અમે પૂજા અર્ચના કરી છે અને તમે પણ પરિક્રમા કરીને આવ્યા છો તો ગુજરાતની દરેક જનતા વતી આપણે બધાએ પ્રાર્થના કરીએ માં નર્મદાને કે બધાની સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે। આપણે નર્મદા માતાની અને એમના અવતરણથી ગુજરાત તો કેટલું હરિયાળું થયું છે આપણે સૌ જાણીએ।
એ નર્મદાના આવવાથી આપણા ગુજરાતમાં જે પાણી અને પાણીની જે તંગી વર્ષો વર્ષ રહી એ બધી તરસ વડાપ્રધાનશ્રીએ એની વ્યવસ્થા જે વ્યવસ્થિત રીતે કરી નહેરથી તે કચ્છ સુધી લઈ ગયા છે। गुजरात के नर्मदा जिले में इन दिनों गुजरात की जीवन डोर पवित्र नर्मदा मैया की परिक्रमा चल रही है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का अनोखा महत्व है। नर्मदा जिले में चैत्र महीने के दौरान नर्मदा परिक्रमा करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और नर्मदा जिला प्रशासन द्वारा उत्तर वाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में अलग अलग घाट पर तैयारी की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी बस लઈને અમદાવાદથી અહીં પરિક્રમા કરવા આવ્યા છે, પણ અમને બહુ જ મજા આવી, ખૂબ જ આનંદ થયો। પણ જસ્ટ એટલું કહેવાનું છે કે આ રસ્તામાં જે બહુ કાંકરાની છે, થોડો રસ્તો સારો બનાવો તો અમારા માટે બહુ સારો છે ને બધાએ પરિક્રમા આવવા જેવું જ છે। સીએમ સાહેબ આવેલા અમારા અમદાવાદના છે, એટલે અમને તો ખૂબ જ આનંદ હોય એ વિશે। मेरी आज से शुरू हुई है परिक्रमा, आज 11 से शुरू करके पूनम तक 5 परिक्रमा कंटिन्यू करूँगा। पिछले साल भी ऐसी तरह से 5 परिक्रमा रखी थी। पिछले साल की तुलना में इस साल जो गुजरात सरकार ने जो प्रबंधन किया हुआ है बहुत बढ़िया है। जो सुविधा दी है बहुत अच्छी है। सुविधा के बारे में पिछले सालों भूतकाल को भूल जाना चाहिए। एक साल में नई सुविधा अच्छी तरह से मिल रही है। गुजरात के बोडेली में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन पर विधानसभा के पूर्व विपक्ष नेता सुखराम राठवा ने पत्रकार परिषद की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की गुजरात में आज से शुरुआत हुई है, जिस पर पूर्व विधानसभा के विपक्ष नेता सुखराम राठवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मीटिंग को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश के कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी गुजरात आए हैं, जिससे गुजरात में जरूर कुछ नया होने जा रहा है। गुजरात माटे, गुजरात कांग्रेस माटे आ अगत्यनो दिवस छे એટલા માટે કે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી જેને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જેને સુકાન સંભાળ્યું હતું, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટીની આ એક અગત્યની મીટિંગ આખા દેશના અલગ અલગ રાજ્યના વડવાઓ ભેગા થવાના, કાર્યકારિણી ભેગી થવાની અને એમાં મહામંથન થવાનું। દેશી ભાષામાં વાત કરું તો આ મહામંથનની શિબિરમાંથી સારો નિચોડ વરાવશે। લાંબા સમયથી ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ વખતો વખત હારતી રહી છે, એના કારણો પણ અમારા નેતા રાહુલજી સામેડા છે। પણ અત્યારે ગુજરાતમાં એક માહોલ તૈયાર થઈ રહ્યો છે કે ગુજરાતમાં અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષની કાર્યકારિણી મળી રહી છે અને એને કારણે કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે। ગુજરાતમાં ઘણું બધું નવા જૂની થવા જઈ રહ્યું છે, એનો પાયો ગુજરાતમાંથી જ નખાવાનો છે। હું પોતે સમજુ છું, અમારા નેતાઓ પણ કહે છે તેમ બ્રિટિશરોને હાંકી કાઢવા માટે ગુજરાત પહેલ કરી હતી, એમ કહું તો ખોટું નહીં। મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ અંગ્રેજોને બહાર કાઢી મૂકવા માટે જે ચળવળ શરૂ થઈ અને અંગ્રેજોને બહાર કાઢી મૂક્યા, આજે એ વાતને 100 વર્ષ 75 વર્ષ થયા આઝાદીના। એ જેની જે સ્થાપના થઈ હતી એના 100 વર્ષ થાય છે 8મી ને 9મીએ। ત્યારે આ દેશમાં કુશાસન ચાલી રહ્યું છે, કુશાસનને કાઢી મૂકવા માટે ચોક્કસ મહામંથન થશે। પ્રજાને સારો વહીવટ કેમ મળે, પ્રજાના કાર્યો કેમ થાય અને પક્ષને મજબૂત કરવા માટે અમે લડીએ છીએ। સત્તા માટે નથી લડતા, અમે લડીએ છીએ જનતાની આવાજ માટે લડીએ છીએ, પ્રજાના રક્ષણ માટે લડીએ છીએ, બાબા સાહેબના બંધારણના रक्षण माटे लड़िए छे। गुजरात के वडोदरा की कई सोसाइटी में कई वक्त से पानी की किल्लत सामने आ रही है। वडोदरा के हरनी एयरपोर्ट से आगे अभय आनंद सोसाइटी है, जहां पिछले कुछ महीनों से पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। इस मामले आज दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के ऐलान के साथ ही कॉरपोरेशन द्वारा इन निवासियों को कुछ समझा बुझाकर प्रदर्शन से रोक लिया गया। दरअसल यहाँ पिछले कई वक्त से गर्मी के मौसम में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी के लिए यहाँ स्थानीय निवासियों को पानी के जग मंगाने पड़ते हैं।
जिसके बाद भी स्थानीय कॉरपोरेटर के कहने से यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन से डरते हुए नजर आए। ऐसे में सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे नागरिकों में सत्ता पर बैठी पार्टी का डर साफ साफ नजर आया।